मिसलेनियस क्वेश्चन फिटर उपरू ओके सब उपरू मिसी मुसाकी क्वेश्चन अच्छी आपण मानक स्वागत करी मु हेमंत कुमार विश्वाल आमर यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब को आज पूरा 100 MCQS क्वेश्चन मुझे नहीं चलो डेरी नक स्टार्ट करदे आज सेसन को ओके टाइम ना आशा कर बहुत लेट हो गला बस 1 मंथ आगे जो आम स्टार्ट करते बहुत बेटर हो पाता चलो स्टार्ट करदे प्रथम क्वेश्चन अच्छी आप माराथन क्लासेस ओके क्वेश्चन अच्छी प्रथम क्वेश्चन ना द डिस्टेंस ओ माय गॉड फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी द distance a drill moves into the work for each revolution of spindle is called okay এটা কোন হবো না এটা आंसर হই যাব অপশন এ ফিট অফ দা ড্রিল ওকে অপশন তোমার সহ হচ্ছে তো এটা অপশন এ ইজ দা রাইট आंसर তো কোন হবো যেতবে সে ভিতরକୁ পসিব দেন ফিট অফ দা ড্রিল সেটাକୁ কোয়া যাব ওকে নেক্সট क्वेश्चन नंबर 2 द यूज ऑफ पाइप रिमर ऑप्शन बी द राइट आंसर टू रिमूव द बोर पाइप रिमर काम कौन ना टू रिमूव द बोर चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये सब आप मन रखा पड़ो ये देख गोटे हूँ स्लीप गज उपरी स्लीप गज व्हिच सेटिंग द राइट द एंगल ऑफ साइन बार साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल द साइन बार रिप्रेजेंट्स तो ये साइन बार कौन साइडटा रिप्रेजेंट्स करुच्ची राइट एंड ट्रायंगल साइन बार रिप्रेजेंट साइन बार कौन लगे हाइपोट ये लगी निश्चित भाव जाना थी ये स्लीप गज अच्छी ओके साइन बार कौन हम हाइपोट न्यूज आंसर हम हाइपोट न्यूज सी द राइट आंसर ओके सी द राइट आंसर तो बुझी आम शीघ्र शीघ्र क्वेश्चन कर पड़ेगा ओके जोटा इंपोर्टाट अच्छी जोटा आपको दरकार मुझे कहीदेवी ओके जोटा खाली जस्ट मन रखार अच्छे बस से टाइम वेस्ट करार नहीं ओके चलो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम लिमिट एंड फिट टॉलरेंस 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस दीज आर केतर केते ये बहुत इंपोर्टेंट अच्छे ओके बहुत इंपोर्टेंट रही क्वेश्चनटा आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर ओके 18 ग्रेड से कहला IT 01 होगा तो आप मन रखिए IT 1 पाखु IT 16 1 2 3 4 5 6 16टा है IT 01 IT 01 और IT 0 यहाँ दुईटा रहा तो 18टा होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम करिया 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स shown in the taper in figure okay तो ये कौन होगा आंसर सी इंक्लूडेड एंगल ऑफ टेपर इंक्लूडेड एंगल ऑफ टेपर बिग एंड ऑफ टेपर डायमीटर टेपर नुहे ये इंक्लूडेड एंगल ऑफ टेपर सी ये जो अच्छी सी इंक्लूडेड ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जनरल कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल HSS इज द रेशियो ऑफ 8:1 तो ये गोटे सर्टकट मत आम सार मैंने भी कही टीवी भितर किए छुआ टीवी भितर किए अच्छे छुआ अच्छे है ये हूँ टंगस्टन ये भानाडियम ये हूँ क्रोमियम ओके तेना 18:4:1 तो आपको कौन दरकार ये हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल मागिज जनरल कंपटीशन हाई स्पीड 18टा कौन रेफर्स कर 18 ये रेफर्स कर कौन टंगस्टन बी द राइट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 7 द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू इट्स करस्पोंडिंग बेसिक साइज मैक्सिमम बेसिक साइज को अपर मिनिमम बेसिक है लोअर तो ये हूँ कौन हो 7 नंबर बी द राइट आंसर अपर डेविएशन क्वेश्चन नंबर 8 when checking bore with 3-point internal micrometer the type of error dedicated when checking bore with 3-point internal micrometer the type of error detected है तो सेटा की एरर हम ये हो मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर मैक्रो चेकिंग ऑफ बोर 3-point इंटरनल माइक्रोमीटर तुम 3-point इंटरनल माइक्रोमीटर चेकिंग कर बोर को ओके कौ टाइप एरर डिटेक्ट हम यहाँ हूँ मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर माइंड इट ओके ता विषय में डिटेल्स कहवा फॉर शोइंग कास्ट आयरन द कूलर यूज जो कास्ट आयरन यूज कर कास्ट आयरन बेले कौन हम ऑप्शन बी द राइट आंसर ड्राई एयर क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अंडरगो टेलीफोन एंड
पावर केबल्स फ्रॉम करोजन्स है अंडरग्राउंड टेलीफोन्स अंडरग्राउंड रे यूज होची कौन ना ये आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी लीड है लीड गोटे मेटाल जैकि अंडरग्राउंड यूज होची टेलीफोन आउ पावर केबल्स पाई ओके करोजन बचे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 द जीरो चेकिंग इज डन फॉर 0 to 25 डेप्थ माइक्रोमीटर अने जीरो चेकिंग करिया हमर डेप्थ माइक्रोमीटर रे 0 to 25 टा हेटा हम कोन नै नबा सरफेस प्लेट ओके सरफेस प्लेट रे हम देखि परिबे जीरो सेटिंग अछि नै सरफेस प्लेट क्वेश्चन नंबर 12 द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट सोल्डर इज विद इन द रेंज ऑफ वेरी इंपोर्टेंट आंसर बी द राइट आंसर 183 रु 255 डिग्री सेल्सियस 13 नंबर द डायमीटर ऑफ बेस्ट साइज्ड वायर इन द थ्री वायर मेजरमेंट ऑफ पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड डिपेंड अपॉन कौन ला क्वेश्चन बुझे द डायमीटर ऑफ बेस्ट साइज्ड वायर इन द थ्री वायर मेजरमेंट ऑफ पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड डिपेंड अपॉन है जो आम थ्री जो आम एमती जो मापे ये गोटे वायर एमती रखिकी तले गोटे वायर थी है रखिकी जो मापुचे तो सहीटा कौन एक्चुअली है क्या डिपेंड करे यहाँ हूँ कौन जो आंसर डी पिच आउ थ्रेड एंगल पिच आउ थ्रेड एंगल माइंड इट पिच आउ थ्रेड एंगल थ्री वायर मेथड पिच आउ थ्रेड एंगल क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलेंट व्हिल ड्रिलिंग प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स से आम ये करिया कोंतरे हो ना compressed air question number 15 a phosphorus bronze split bearing bush is to finish machined on center lathe a phosphorus bronze split bearing bush is to be finished machined on center lathe center lathe रे phosphorus bronze रो split bush टाको आमे finishing करूचे the slitting of bush into two halves is done okay कौन आंसर जो कौन ना सी आफ्टर रफ ओवरसाइज टर्निंग द कॉलर स्टेप एंड रफ बोरिंग ओके चलो क्वेश्चन नंबर 16 रेक एंगल इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए फॉर्म टूल यूज्ड टू प्रोड्यूस टेपर ऑन ए वर्कपीस द रीजन फॉर दिस इज आंसर ऑप्शन सी टेपर एंगल इज नॉट affected by resharpening okay rake angle is not provided on a form tool form tool le rake angle ta provide kara hi nothibo you to produce taper on workpiece the reason kon pai na answer option C is the right answer taper angle is not affected by resharpening da taper angle effect pora nai se pai taro rake angle provide kara nathbe form tool method re okay chalo question number 17 a simple change gear train is used to cut a certain pitch thread due to the non availability of the required gear from the set down gear with 3 teeth more than that of the calculated value is mounted the thread that cut with have a pitch कौन हम यहाँ तीन टा कथा कही अच्छा अच्छा ये जो लेस देन दैट रिक्वायर्ड ऑफ द फुल थ्रेड लेंथ ओके क्वेश्चन नंबर 18 देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द मेटल इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग वेल्डिंग ब्राजिंग एंड सोल्डरिंग व्हिच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मोस्ट एसेंशियल है कास्टिंग वेल्डिंग आ ब्राजिंग आ सोल्डरिंग बेले को प्रॉपर्टीटा बेसी रहा दरकार से मेटाल एटा हूँ फ्यूजिबिलिटी जो मैं तरली की पड़ो है फ्यूजिबिलिटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स शो द फिगर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द तो ये देखो आंसर हो कौन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर होल बेसिस रे कौन हम देखो होलटा ऊपर रहो देखो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर होलटा ऊपर रहो साफ्टा रही चलो 20 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लेस कार्बन कंटेंट पिग आयरन रट आयरन प्लेन कार्बन स्टील और कास्ट आयरन ये जो रट आयरन सब 0.002% कार्बन परसेंट थाए बहुत कम थाए है लेस कार्बन कंटेंट ओके क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ
catching the thread take the long time. Which of the following method of catching the thread takes the long time? এটা କ'ଣ ହେବ ନା marking on works, option C is the right answer, marking on work holding device and lead screw. ହେଲା, marking on the work holding device and lead screw, ଏଥିରେ longest time ପାଇଁ ରହିବ lead screw. ଆଚ୍ଛା, question number 22, the carbide tippet tool with blue marking is used on a lathe. Which one of the following material can be used with this tool? Answer option B the right answer, steel. Okay, a carbide tippet tool with blue marking is used on a lathe. Which of the following material can be machined with the tool? Steel. Question number 23, a workpiece shown in figure has to be 45-degree chamfer during the form tool and by plug cutting. The depth of cut to be given using a cross slide after zero setting. केते दिया जो 45 डिग्री chamfer कट करे भाई केते डेप्थ कर दिया जो ऑप्शन बी 3 mm is the right answer. आशा करुच्ची क्वेश्चन गुड़ा जो मुझे आपंट सिलेक्टेड क्वेश्चन तो गोटे बहुत इंपोर्टाट रहा ओएचपीसी एग्जाम ही आसो आप कौन लगुच निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे एवं गोटे कमेंट दिखाँ आप गोटे सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम दूँ आप कमेंट दिखाँ एवं कमेंट दिखाँ बस आम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िया. ओके, जी भी देखुं आपन को कहि कि आप कमेंट दिखाँ देख कमेंट बटन में आप कमेंट स्लॉट्रे आप ये करूँ आप किसी ना किसी आप कमेंट जहाँ भी मन को आस गोटे कमेंट दिखाँ मुझे जानापी चाहूँगी जिते पर्यंत बर्तमान जहाँ भी है जिते पर्यंत केते 11 मिनिट पर्यंत जो मैंने देखुं निश्चित भाव में कमेंट दिखाँ. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 24. थैंक यू फॉर योर गिविंग द कमेंट. A rope turning tool is ground by hand on a pedestal grinder. After grinding it to observe that the ground face of the tool are concaved. Which one of the following statement is cause for the defect? कौन कहला? Now a rope turning tool is ground by hand on a pedestal grinder. है गोटे पेडस्टाल ग्राइंडर हेड द्वारा रफ टर्निंग टूल ग्राउंड कराऊँ. आफ्टर ग्राइंडिंग इट इज ऑब्जर्व दैट ग्राउंड फेस ऑफ द टूल कनकेव होगा माने गातुआ होगा टे है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कौन मस्त क्वेश्चन कहला क्वेश्चन मस्त कहला. तो से कहला जे हाथ द्वारा गोटे ग्राइंडिंग करुँ पेडस्टाल ग्राइंडर से फेसटा कौन है कनकेव होगा मैंने से कौन कर ग्राइंडिंग इज carried out on a peripheral grinding wheel. है ग्राइंडिंग जो करी ग्राइंडिंग इज carried out on a peripheral grinding wheel. एटा राइट आंसर हो peripheral grinding wheel एटा कौन हो कनकेव हो फेसटा कनकेव हो एमती. ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर इज लीड एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर इज लीड एंड tin. Option B the right answer. Question number 26, a standard solid plane mandrel is generally made of tool steel hard and ground with taper. कौन हम? Question number 26, a standard solid plane mandrel is generally made of tool steel hard and ground with taper. बाबा एटा ऑप्शन डी कौन आंसर दला ऑप्शन डी 1:2000. Question number 27, which of the following standard taper is self holding type? कोटा सेल्फ होल्डिंग सेल्फ होल्डिंग आपको जान रखा पड़ो. ये सेल्फ होल्डिंग टाइप होची ऑप्शन ए द राइट आंसर मोर्स टेपर. क्वेश्चन नंबर 28, the amount of offset of tailstock for taper turning is done by offset screw provided to produce followed. ये कौन हो loosen the screw opposite to the direction of movement and tighten the other screw. Option C is the right answer. Question number 29, the tensile stress is tensile load divided by. The tensile stress is tensile load divided by. देखो ऑप्शन सो होची क्वेश्चन ऑफ डी द राइट आंसर वॉल्यूम ऑफ वर्कपीस. क्वेश्चन नंबर 30, metal possesses physical and mechanical properties. Which of the following is physical properties? फिजिकल प्रॉपर्टी कौन जाऊँ फिजिकल प्रॉपर्टी किसी केमिकल प्रॉपर्टी किसी से सब जिन आप जानते तो ए फ्यूजिबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी जाऊँ फ्यूजिबिलिटी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्लिप गज इज मेड फॉर कैलिब्रेशन पर्पज.
ये जो कौन कैलिब्रेशन रे ग्रेड 00 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन 32 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ होल एट शाफ्ट रिजल्ट इन क्लियरेंस फिट अंडर शाफ्ट बेसिस सिस्टम ऑप्शन सह होची एटी 32 क्लियरेंस फिट अंडर शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्लियरेंस माने एबीसीडी थिबो शाफ्ट बेसिस माने एटी देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके चलो क्वेश्चन नंबर 33 ये जिन आपको सब्जेक्टिव में कहले मुझे डिटेल्स कहबा बहुत मजादार बाट गोटे भी क्वेश्चन भूल हेनी ओके बाकी आपने ओएचपीसी एग्जाम मन रखी बस एंगल ऑफ स्लिप गज आर प्रोवाइडेड विथ बिल्ट अप मेजर द एंगल दैट कैन बी मेजर विथ स्टेप बाय स्टेप ओके तो यहाँ प्लस माइनस एमती डायरेक्ट क्वेश्चन ही पड़े 18 जिन यार भी कैलकुलेशन अच्छी यहाँ सी हो राइट आंसर सी हो राइट आंसर ताले कौन हो सी द राइट आंसर 15 डिग्री 35 मिनट 42 सेकंड ओके 34 सिंगल पॉइंट मेट्रिक वी थ्रेडिंग टूल आर चेक्ड फॉर इट्स फ्लैंक एंगल एक्यूरेसी बाय यूजिंग 34 ना 34 है सिंगल पॉइंट अच्छा एटा सेंटर गज सिंगल पॉइंट मेट्रिक वी थ्रेडिंग टूल आर चेक्ड फॉर इट्स फ्लैंक एंगल एक्यूरेसी बाय यूजिंग बी द राइट आंसर सेंटर गज अच्छा 35 काउंटर बोरिंग इज डन फॉर डी accommodating socket and head screw D is the right answer counter boring is done for accommodating sockets and head screw question number 36 a product is said to be quality product केतले क्वालिटी को हबो जेरा fit for use option C the right answer it is fit for use question number 37 which one of the following cutting fluid is used during grinding mild steel okay mild steel option C the right answer soluble oil which one of the following cutting fluid is used during grinding mild steel soluble oil question number 38 you have to cut thread on aluminum which one of the following collant is used aluminum cutting करियो कौन हबो ना kerosene option B the right answer okay kerosene चलो question number 39 different thread have got different depth yes which one of the following has got highest depth कार अछि एटा होची 39 सी वर्म थ्रेड होची हाईएस्ट डेप्थ क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज लार्जेस्ट टॉलरेंस माने जो ऊपर तळ को माइनस करले जोटा अधिक होबो सेटा लार्जेस्ट टॉलरेंस जीवो 40 नंबर ओके कोइ द पे चाहिए 80 असल डी द राइट आंसर लार्जेस्ट टॉलरेंस तो लार्जेस्ट टॉलरेंस मैंने मुझे थोड़ा जानवाई चाहिए आपको देखो यहाँ हूँ ऑप्शन एटा कथा कह 40.005 अच्छी ये है 39.00098 है ओके तो ये केते 5 7 007 है ओके अच्छा तो एटा भी तो आसीज पाखापाखि तो ये मन रखिए लार्जेस्ट टॉलरेंस जो कहीदेव ये तो ये है 40.000 ये है 39 पॉइंट 00 ये पॉइंट वर देछि ओके केवल केटा यहाँ केवल यहाँ 98 तो जो पॉइंट ओनली देला 0.0 देला नहीं तो ये लार्जेस्ट टॉलरेंस यहाँ जीव ओके चलो बुझीला कथा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 द मेन लोड दैट द सर्कल इज सब्जेक्टेड टू 41 द मेन लोड द सर्कल इज सब्जेक्टेड टू ऑप्शन सो होची आंसर थ्रस्ट thrust load that circle is subjected to thrust question number 42 standard taper of taper pin
Okay, question 42, 1:50. The standard taper of taper pin is 1:50. Question number 43, inspection is the tool for zero defect production which shut out component of zero defects. Inspection is the tool for zero defect production which spots out component of zero defects. Inspection is the tool for zero defect production which shut out component of zero defects. जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट आम क्या कहवा जिते सर्ट आउट कंपोनेंटा जीरो डिफेक्ट हम यहाँ हूँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन 44, one of the quickest software method for checking surface quality is to check the finished surface against standard comparison plates of surface textures. A set of surface texture consists of option B 20 plates. Brass is an alloy of A copper and zinc. Okay, question number 46, which taper is used on spindle nose of lathe head stock रे क्यों taper अच्छे जोड़ा था चाहिए ऑप्शन डी द राइट आंसर मोस्ट taper. ये सेमती आसला पुणी स्लिप गज मैथमेटिक्स गोटे आसची এটা कौन हम ऑप्शन 47, क्वेश्चन 47 डी द राइट आंसर. 14 डिग्री 24 मिनिट 18 सेकेंड. जदि यार कैलकुलेशन आप जानापी चाहूँगी स्लिप गज केमी आप बाहर करेंगे निश्चित मत कमेंट करूँ मुझे आपको कहीदे कमेंट करूँ बस कमेंट आसा दरकार मत. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, a workpiece is to be manufactured with dimensions of 60 and tolerance एतिकी. which of the following specific correct क्या कौनटा या भितर जाऊँ करेक्ट कौनटा. ओके, वेरी इंपोर्टेंट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर है. टॉलरेंस केवल दिखाई एटा 0.02 दिखाई केवल ये देख टॉलरेंस दिखाई दिखाई कि दिखाई नहीं. राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट फेवरेबल मेटल फॉर केमिकल प्लांट्स एंड फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट is stainless steel because the highest corrosion is 49. D, elevated temperature, the most favorable metal for chemical plant food corrosions elevated stainless steel because it's highest elevated. D answer right answer. Question number 50, which jig is used for drilling thin sheets. Oh nice question. Sandwich jig. ऑप्शन बी द राइट आंसर. सैंडविच देखो सैंडविच खाऊ मैंने तुम कौन हो मोटा ही हो कि थिन सीट्रे काम दूचे. ओके, ड्रिलिंग थिन सीट्स मन रख सर्टकट. तो आशा करुच्ची क्वेश्चन यहाँ आम 23 मिनट होगा आपने भी निश्चित भाव में जो वीडियो फास्ट क्लास देखते बोरिंग होनी तो 50टा क्वेश्चन ही थाऊ आप निश्चित भाव में कमेंट करूँ मुझे नेक्स्ट पुणी वीडियो अपलोड कर दूसरी आउ किसी क्वेश्चन. ओके, तो थैंक यू. आशा करुच्ची आपण मानी जो क्वेश्चन मुझे नहीं आसी क्वेश्चन गुड़ा सब इंपोर्टाट रहा ये भर क्वेश्चन आसीज कि देखी दिंतु क्वेश्चन कौन आम एट पढ़ु से बड़ नुहे आम रियलाइज करिया एनालिसिस करिया केते बुझिले सेटा होछ बड़ जिंस है. तो से अनुसार ऑप्शन काटिक आपने. ओके, थैंक यू. आशा करुच्ची आपने वीडियो देखिले कि शिखिले और जानिले आगू मुझे आगे वीडियो नहीं आसबि आप कमेंट कर निश्चित भाव में मत मोर हौसला बढ़ातु. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. स्टे हैप्पी. बाय बाय.